We will try to analyze some of the main, very important features what Excel has. We will go through in a very quick analysis manner. And also, as a part of bonus, I'm going to teach some of the new techniques to make your work faster. If you're stuck in some formulas and if you're stuck in some places, how can you get out of that place with the latest technologies what we have? And also, you at the end we will have like a question answer session to take up like any doubts you have regarding the whatever we have learned in the Excel class. Today, I'm gonna teach how can you take help from chat GPT. Nowadays, artificial intelligence world is changed the way we look at things. So similarly, uh, chat GPT can offer us a lot of excellent stuff, especially if you are willing to learn, if you are willing to make your life easy to use Excel. With the help of chat GPT, I remember I showed some of the techniques, like if you want to create a dummy data table, so you don't need to uh, type all the dummy data. For example, if you are talking about creating a sample school student database, then you start designing the data by serial number, name, roll number, how much marks he has taken from the each subject, total, average, result, all the stuff. So this can be automated with the help of ChatGPT. The first part of automation can be done. You can ask ChatGPT, please give me like 100 row of student data, and you can tell my table should have name, roll number, all the six subjects. Then it will create a beautiful table full of text. Then you can bring the text into your Excel. So this is like a lot of your manual data entry to learn Excel will be saved. So you can save a lot of time in creating a sample table. Similarly, if we saw, we created one showroom management Excel sheet wherein you saw all the car brands selling of particular month. This data also you can retrieve from ChatGPT. You can tell ChatGPT that I want a car sales day-to-day data, sample data with so many columns: car brand, cost, salesman name, which brand of the car it is. So ChatGPT will give you excellent data so that you can copy paste. Now the interesting thing is you can also take help from ChatGPT to create the formulas. So if you are stuck in some places, you can easily ask ChatGPT to give you the what you call the formula. ChatGPT can write formula for you. For example, we saw student management Excel sheet we created. In the result column, if the student is pass or fail, if you don't know how to formulate the formula, then you can go to ChatGPT and tell that my Excel sheet has a student database, and the marks is having from particular C5 to E10, something like this, the range you can tell. Please give me a formula to analyze whether the student is pass or fail. And you will be surprised how beautifully it will give you the Excel formula. Similarly, if you want to know the particular, for example, you have um, in the student database, you have one column called date of birth of a student. And in one column, you want to know what is the age of this student. So in order to find age, you need to write a formula, right?
So you can ask ChatGPT, write a formula to know the age of a person, and where in particular cell there is a date of birth. So it will take the date of birth from a cell, and it will write a beautiful formula, and it will give it to you. So this is like some of the example where you can easily utilize the latest technology and benefit out of it, and you eventually you will save your time. Like nowadays it looks like 24 hours are not enough to fulfill our work and commitment. So whatever time you save, that is good for us. You must be thinking, ये पहले क्यों नहीं बताए, अगर फर्स्ट क्लास में बताते so we could have saved a lot of time. So the reason why I am discussing this at the last class is that person should know how to do the hard work and how to create the formula and how to understand the technicality of writing a formula. So when the base is strong of a student, then just to save time, you can use the chat GPT. I'm not saying that from the beginning you use chat GPT. No, first you learn Excel terminologies, formulas, and make yourself very expert in the context. And then while doing the day-to-day work, you can utilize the chat GPT in a way. So I know, like, until you see from your eyes, you will not believe it. So let's try to uh, explore the chat GPT, and we will see how exactly it can help us. So first thing what you need to do is to, in order to utilize the chat GPT function, I hope you can see the screen. I am sharing the chat GPT screen with you people. Now, quick question. How many of you have not used ChatGPT in your life so far? Raise your hands. How many of you have not used? Two, three, four, five, six, seven. Oh. Hmm. There are a lot of hands being raised. So that means you're missing out such a great technology in the world. Anyways, can you put down your hands? Thank you very much. Jazakallah khair. Uh, I keep getting suggestions from our YouthWing members to also use Hindi and Urdu in between. I keep forgetting. चैट जीपीटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है, जिसके थ्रू आप जो भी सीखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं है, आप हासिल करना चाहते हैं, जस्ट लाइक हाउ गूगल विल गिव यू आंसर फॉर एवरीथिंग, chat gpt is like a google, but in a way it will understand. You can talk to chat gpt to get your things done. आप chat gpt को कम्युनिकेट कर सकते हैं कि मुझे, फॉर एक एग्जांपल देता हूँ, आउट ऑफ एक्सेल, चैट जीपीटी, यहाँ पे एक विंडो ओपन होता है। चैट जीपीटी जब भी ओपन करेंगे आप, उसके बाद नीचे जो है एक चैट के जैसा एक टेक्स्ट बॉक्स रहता है। ये लेट मी अनोटेट, दिस एरिया इज द एरिया वेयर यू गोना एंटर योर कमांड। इसको कमांड बोलते हैं। यू हैव टू टेल चैट जीपीटी इज लाइक योर पर्सनल सेक्रेटरी। आप जो पूछो वो आपको एक सिस्टमेटिक डेटा बना के आपको देगी। फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट आउट ऑफ एक्सेल मैं ये कर रहा हूँ। मैं आपको, समझिए कि आप हाला फरवरी के छुट्टियों में आप 5 दिन के लिए आप कुवैत से बाहर बाई रोड जाना चाहते हैं। तो
you can tell Chat GPT that I will be traveling to Saudi Arabia on a 5 day trip. Please give me 5 day road trip plan to visit places. अगर सिर्फ ऐसा अगर आप टाइप करेंगे तो आप इसका जवाब देखिए कि ये क्या क्या आपको देती है। तो ये चैट जीपीटी नाउ इट इज टेलिंग दैट डे 1 यू हेड टू रियाद। रियाद से जो है आप अलुला एक शहर है। मॉर्निंग रियाद से निकल के आप मदायन एक गांव है वहां जाइए। वहां पे आप क्या कर सकते हैं वो बता रहा है। उसके बाद आफ्टरनून अलुला वर्ल्ड टाउन आप जाएंगे। इवनिंग एलिफेंट रॉक एक एरिया है वहां पे जाके आप टाइम स्पेंड करेंगे। डे 2 यू विल डू अलुला टू मदीना। मदीना में क्या करना है वो भी विजिट अल खुबा मॉस्क फर्स्ट मॉस्क इन इस्लाम। आफ्टरनून प्रोफेट्स मॉस्क। सो 5 दिन का जो है आपको एक इटनरी बना के दे दिया। इसी तरह कुछ भी आप चैट जीपीटी को पूछ सकते हैं और वो जवाब देगा आपको। एनी फाइनेंशियल थिंग हेल्थ रिलेटिंग आपको हेल्थ का कुछ ये हो रहा है तो जस्ट टू नो के व्हाट इट इज यू कैन आस्क। तो chat gpt जो the people who haven't used chat gpt you need to go to a website called open ai. I will copy and paste this in the both the groups. यहाँ पे डाल दिया और लेडीज ग्रुप में भी मैं ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा हूँ। व्हेन यू गो टू दैट लिंक first it will tell you to log in through any of the email. It's better always to log in with your Gmail so that you don't need to remember your password every time. तो लॉग इन होके जैसे ही जाते हैं तो ये स्क्रीन दिखाता है। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द एक्सेल हाउ टू यूटिलाइज एक्सेल थिंग इन द चैट जीपीटी। मैं एग्जांपल लेट्स कम बैक टू student table. See, this is the student table here. Now, as I told, assume that I have one date of birth करके एक column है and uh, randomly I have dates. ये डेट को से खींचेंगे तो वो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके डेटा दे देगा। ओके नाउ अब चैट जीपीटी आप समझिए कि फर्स्ट थिंग यू नीड टू लर्न इन ऑर्डर टू गेट हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी इज उसको कमांड देने के लिए आपको ये जो अगर फार्मूला अगर आपको यहाँ पे एज का फॉर्म समझिए कि एज करके एक कॉलम है। यू आर एंटरिंग एज फार्मूला हियर। नाउ in order to tell ChatGPT that date of birth is in which row, I mean the reference. See, the column is called n column, and the row is 6. Okay. If you click here, you can also see the address. To know the address, if you see here, ये आपको यहाँ पे दिखाएगा कि इसका ये सेल का रेफरेंस क्या है करके यहाँ पे दिखाएगा। नाउ यू शुड रिमेम्बर द रेफरेंस N6 के जगह पे एज है। ओके सो फोकस विथ मी। नाउ लेट मी गो बैक टू चैट जीपीटी। नाउ आई विल टेल इन एक्सेल आई हैव डेट ऑफ बर्थ इन cell N6 comma, please write me a formula
to know the age. ओके, प्रेस एंटर। तो अब वो देखिए कि वो एक एज का एक फार्मूला बना के दे देगा। when you see this black color thing, that means when you see this one, that means it's giving you a particular code, the formula. तो यहाँ पे अगर आप देखें ये एरिया में इट इज रिटर्न का कॉपी कोड, ये कोड को कॉपी करने का एक टूल है। इफ यू क्लिक हियर, द फार्मूला ऑफ योर एक्सेल शीट विल बी copied here. Now let me go to Excel sheet. Now here in the age cell, I will paste the formula here. Age, date, diff, 11, 19. ओके, यहाँ पे है ना, इसको नंबर करना है। तो सी द एज ऑफ द दिस स्टूडेंट इज 45। मैं अगर ड्रैग करूंगा तो सी द इट्स सच ए ब्यूटिफुली, इट कैलकुलेटेड द एज ऑफ all the students so easily. You don't need to worry about the for writing a formula. Look at the formula here. If I highlight this thing, this formula looks such a complex one. अगर आपको खुद को लिखना है तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन माशाल्लाह इसने, चैट जीपीटी ने 1 सेकंड में आपको फार्मूला लिख के दे दिया, and you are able to find the age of a particular student also. So this is the beauty of the chat GPT. You can make use of this excellent tool. Similarly, it's just about how you talk to chat GPT. The way you explain your problem, that is very important. Now see, I have next column called result. If you remember, we all did the formula for the result of a student, whether he is pass or fail. Now, just note down the subject, the mathematics subject starts from the cell reference, it starts from E6, and last subject ends at I6. Okay. So now let's go to chat GPT. I will write, I have a student table in Excel. Please write me a formula to know the result, pass, fail. The marks are in what I said, it is from E6 to I6. E6 to I6 range. Just press enter after writing this one. So let's see if this formula works for us. If your this thing is wrong, okay, passing score it is saying, because it said he does not know passing score. Some schools have 30 as a passing score, some has 50. So now assume if 30 number as a passing score, then see this student got passed. If you see the now see the formula here, it is saying that passing score, where it is written the formula, passing, in the place of passing score, you should write whatever the school thing is. I will come back to Excel here. See the formula, the same thing, the same formula I copied.
it is written in the place of passing marks, I gave number 30. So easily it written the one straightforward formula to know whether a student is pass or fail. So all the students are passed. So let's see if I make one. If some of ये total ये ले रहा है ये. Okay, let's see. Okay, so now let me show you the this thing. I told the chat GPT that give me formula by checking each marks of a student subject. So it wrote another formula here. If you see here, it wrote another formula which says, let me copy this formula from here and I will delete this. I will paste the formula and you just need to write wherever the passing score, you have to write number 30 because we are considering 30 as the passing score. Yeah, it is finding each subject whether the kid is pass or fail in each subject. So similarly, you can keep asking the chat GPT how exactly you want your uh, end result to be. Also, like grade, I will tell same formula. I have a formula. I have a student table in Excel. Please write me a formula to know the grade. Marks are in range. I will provide the range where it is from E6 to I6. I will copy the formula. I will go back to Excel sheet. I will paste the formula. See, if I drag the formula, it is saying the based on the total marks received, it is saying what is the grade they have received. If it is greater than 90, uh, mathematics to, yeah, like the average. Okay, let me write another command.
I have a student table in Excel. Write a formula to know the grade. Average mark. Average marks is in uh, M6. I will copy this one. Let's see how it will do. See, the grade of this kid is D. If I scroll down, somebody has F, somebody is A, somebody is D, because based on the average marks they have received, it found the grade of the kid. So like this, you can utilize Chat GPT to help you write a formula for you. So this is like something which you should really explore. You do your homework on how you can utilize ChatGPT. Somebody is asking the question. Yes, Mohammed Afsal. सर Yes, अस्सलाम वालेकुम सर। welcome salam. सर एज वाला फॉर्मूला एक बार फिर से दिखा सकते हैं कैसे आपने चैट जीपीटी से किया था? हाँ, देखिए, मैं आपको इसको ये करता हूँ, ये हटा देता हूँ मैं। और एज के लिए आपको बर्थडे चाहिए, ठीक है? बर्थडे ओके कौन से साल में है वो एक बार देख लीजिए। सवाल चैट जीपीटी को सेल नंबर बताना पड़ता है कि बर्थडे किस में है। अगर आप देख रहे ओके हैं यहाँ पे, तो बर्थडे जो है N6 में एन है। सिक्स। N6। तो मैं चैट जीपीटी का स्क्रीन को शेयर करता हूँ आपके पास। ओके, ये चैट जीपीटी है। तो यहाँ पे जाके in Excel, I have date date of birth in cell N6. Please write me a formula to know the age. आपको चैट जीपीटी इस्तेमाल करने के लिए ये कमांड देने के लिए आना चाहिए। आप जो है ये कमांड सही सर देना आपको ये आना चाहिए। प्रॉम्प्ट मैं दे रहा हूँ, ये प्रॉम्प्ट मैं दे रहा हूँ सर, तो वो एरर बोल रहा है सर, सही से नहीं दिखा रहा नहीं, आप चैट जीपीटी ओपन करे हैं? है। यस सर, मैं चैट जीपीटी खोल के बैठा हूँ सर। देखिए एग्जैक्टली अब देखिए, ये मैं कॉपी आई करके आई 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 इन एक्सेल आई हैव डेट ऑफ बर्थ इन सेल नंबर N6, प्लीज राइट मी एन फॉर्मूला। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर डेट E6 ऑफ में है। बर्थ कहाँ है देखिए। E6। हाँ, E6 करके डालिए। अब देखिए, मैं आपके सामने ही करके दिखा रहा हूँ। ये ये एक कोड दिया मुझे, फॉर्मूला मैं कॉपी किया। मैं एक्सेल को जाता हूँ, यहाँ पे एज की जगह पे डालता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो वो सबसे पहले तो आपको अगर ऐसा दिखा रहा है तो उसको, ये सेल को बड़ा करिए। ये एक डेट फॉर्मेट में दिखाएगा। वो फॉर्मेट आपको ऊपर जाके चेंज करना पड़ता है। इनिशियली इट थिंक्स दैट यू आर राइटिंग डेट। ओके, तो ऑटोमेटिकली वो डेट ले लेगा। डेट को जो है आपको नंबर करना है, क्योंकि ये एज इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर, राइट? तो नंबर करेंगे तो वो दिखा देगा। सही है? ओके ओके, लेट मी ट्राई। ट्राई करिए, चलना चाहिए आपको। वो डेट फॉर्मेट में रहेगा, उसको आप नंबर फॉर्मेट में ऊपर जाके यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो वो नंबर में दे देगा। ओके सर, लेट मी ट्राई। जी जी। जी समीर भाई, यू कैन आस्क क्वेश्चन ओनली रिलेटेड टू व्हाट वी डिस्कस सो फार। अरशदुल हुदा, समीर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वेलकम। एक्चुअली मैं शुरू से ट्राई कर रहा था आपको पूछने के लिए। अ, अभी जो जो भी सीखा है अभी लास्ट इतने क्लासेस में हाँ, बहुत हेल्पफुल हुआ डे टू डे वर्क में। और जो अल्हम्दुलिल्लाह। रिकॉर्डिंग्स है बहुत हेल्प हुआ, जो मिस क्लासेस हुए थे वो भी कवर कर सके।
सर आप वेरी गुड। मैक्रोस के बारे में बोल रहे थे, एक थोड़ा एक 5 या 10 मिनट के लिए मैक्रोस बता देते तो अच्छा मेरा रहता सर। प्लान है आज इंशाल्लाह मैक्रोस भी आपको मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू सर। ओके। सर सलाम अलैकुम। ये जो अकाउंट है चैट जीपीटी, वो हाँ, हाउ टू क्रिएट सर? चैट जीपीटी वो ओपन एआई डॉट, मैंने लिंक भेजा, देखिए आप एक्सेल ग्रुप में है ना? जी जी। वो मैंने जो ग्रुप लिंक डाला उसको क्लिक करिए, या उसको वो सेम जाके टाइप करके जाएंगे तो वो पूछेगा आपको क्रिएट अकाउंट। आप अकाउंट ओपन करिए जाके, रजिस्टर जैसे रजिस्टर करते हैं वैसा रजिस्टर करिए सर इजीली। मैं ओपन कर रहा हूँ सर, साइन टू ओपन ए आर्टिफिशियल अकाउंट अकाउंट। हाँ उसको कंटिन्यू करने पे ये मांग रहा है आईडी आईडी मेल, फिर हाँ, वो लॉग इन थ्रू जीमेल करके दिखा रहा। नहीं, साइन इन टू ओपन ए आई, फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ तो ओके, मैं यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक रुकिए। शेयर। लॉगिन बनाना पड़ेगा क्या सर? इस पे अकाउंट बनाना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखिए जो लोग ओपन एआई को अगर जाएंगे, यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? जी जी। यहाँ पे चैट जीपीटी का एक ऑप्शन आता है, ओवर, ओके, ट्राई चैट जीपीटी करके एक ऑप्शन है, उसको करिए। यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, लॉग इन और साइन अप। अगर हम्म। लॉग इन है, आपके पास ऑलरेडी जीमेल आईडी है, तो आप हम्म। कंटिन्यू विथ गूगल करिए। ये दिख रहा है आपको? जी जी। यहाँ पे कंटिन्यू विथ गूगल करेंगे तो आपको बार बार वो ये डालने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, आप पासवर्ड डाल दीजिए, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। वो पासवर्ड रॉन्ग बता रहा सर, वो बता रहा पासवर्ड। नहीं, आप शायद इसका गूगल का पासवर्ड भूल गए होंगे, उसीलिए वो बता रहा है। नहीं तो इसका जो आईडी मेल का पासवर्ड वही चाहिए ना उसमें? हाँ हाँ, ये जीमेल का जो पासवर्ड रहता है वही जीमेल चाहिए। का पास, हाँ वही पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ, लेकिन वो रॉन्ग बता रहा है वो। नहीं नहीं, फिर बोल रहा वो टेल अस अबाउट यू, नहीं, बर्थडे, आप ये तो सब पूछ ये रहा है। काम करिए, साइन अप को जाइए। साइन अप में आपका हम्म। ईमेल डालिए, यहाँ पे जीमेल ओके। हो या कुछ भी हो, कंटिन्यू करिए। हम्म। वो फॉर्म फिलअप करने बोलेगा, वो फॉर्म फिलअप करिए, हो जाएगा। बहुत आसान है ये। ओके ओके हम्म। ओके। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, शीशा खतीजा। अस्सलाम वालेकुम सर, ये फॉर्मूला जो आप बोले ना एज का चैट जीपीटी यूज करके, मैं सेम यूज करी नंबर भी, बट वो हाँ, डे फॉर्मेट में भी आ रहा है, डेज मंथ फॉर्मेट में, वो कैसे चेंज करना है? ये देखिए, जब आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे फार्मूला, हम्म। तो ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में ये क्लिक करेंगे तो जनरल नंबर करके है, नंबर सेलेक्ट करिए आप। नंबर ही सेलेक्ट करे बाद भी वो फॉर्मूला आ रहा सर? फार्मूला नंबर सेलेक्ट करने के बाद भी फार्मूला आ रहा है? हम्म। आप फार्मूला कॉपी किए इससे, वो कॉपी हाँ। कोड खाना वो करेगा। मुझे फोटो लेके भेजिए, आपने क्या फार्मूला क्या डाला उसका फोटो लेके डालिए उसमें ग्रुप में। ओके ओके सर। डालिए, मैं चेक करके मैं आपको आंसर करता हूँ। बहरहाल हम लोग फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। बहुत लोगों की ख्वाहिश थी कि हम लोग मैक्रो सीखें, ठीक है? तो हम लोग आज इंशाल्लाह जस्ट लाइक क्विक ओवरव्यू मैक्रो का हम लोग कर लेते हैं। मैक्रो, आप फोकस करके सुनिएगा। मैक्रो एक ऐसी चीज है एक्सेल में, जहाँ पे आप जो डेली रूटीन जो बार बार एक्सेल में जो चीजें करते हैं, उसको, वो एक्शन को रिकॉर्ड करके एक जगह सेव करके रख सकते हैं, सो दैट you can repeat the same action next time without doing the same steps. अगर मैं आसान तरीके से आपको बताना है, तो फॉर एग्जांपल समझिए कि आप जब भी
एक पर्टिकुलर सेल को एक खास अंदाज से आप दिखाना चाहते हैं। इफ आई गो टू, ओके, अब यहाँ देखिए इनवॉइस का एक हम लोगों ने लास्ट में बताया था। तो यहाँ पे आप समझिए कि ये जो टोटल यहाँ पे दिखा रहे हैं आप, उसको अज्यूम के हर जब भी आप एक्सेल वो इनवॉइस का एक शीट बनाते हैं, तो इसका खासियत ये रहती है कि इसको आप बॉर्डर देते हैं। वो भी जो है, फॉर एग्जांपल, बॉर्डर का जो स्टाइल रहता है वो समझिए कि आप डॉटेड बॉर्डर देते हैं, और इसको बोल्ड थिक बॉर्डर का एक ये करते हैं। एक सेल, ये एक सेल में सेलेक्ट करके मैं वो बताता हूँ। समझिए कि बॉर्डर एक्स्ट्रा ये देते हैं, उसका स्टाइल जो है डॉटेड ये रहता है। उसके बाद आप समझिए कि आप हमेशा इसका जो कलर रहता है वो सेल का एक ब्लू ऐसा कलर देते हैं, एंड टेक्स्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज यू गिव द टेक्स्ट कलर एज लाइक दिस। तो ये जो चीज आपने अब जो किया, वो समझिए कि ये फॉर्मेट आपके कंपनी का एक ऑफिशियल फॉर्मेट है, वो फॉलो करते हैं आप। तो इस चीज को बार बार करने के बजाय, अगर ये जितना भी आप काम किए अब उसको रिकॉर्ड किया जाए और नेक्स्ट टाइम सेम चीज उसको प्ले किया जाए, तो कितना अच्छा होगा। तो उसी का नाम जो है मैक्रोस है। मैक्रो के थ्रू आप चीजों को, एक्शंस को रिकॉर्ड करके उसको आप जब चाहिए जब प्ले कर सकते हैं। नाउ इसके लिए एक प्री रिक्विजिट यह है कि यू नीड टू हैव ए टैब कॉल्ड डेवलपर टैब। आप अगर टैब देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको इंसर्ट टैब मिलेगा, ड्रा मिलेगा, पेज लेआउट है, फार्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, ऑटोमेट है। इसी तरह डेवलपर करके एक टैब आता है। आप हैरान होंगे कि आपके पास वो नहीं है। आप अगर जाके एक्सेल ओपन करके आप देखें अपना अपना, तो यू विल नॉट फाइंड डेवलपर टूल। तो इसको क्या करना है, दोज पीपल हु आर वर्किंग इन मैक, आई मीन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो पीसी यूज कर रहे हैं, उन लोग ये एरिया में जाके, जस्ट ये एरिया जाके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, तो कस्टमाइज रिबन करके एक ऑप्शन आता है। हमारे लिए मैं क्योंकि मैक यूज करता हूँ, तो हम लोगों को यहाँ पे जाके ये एक जगह जाना पड़ता है, कस्टमाइज। नहीं, यहाँ पे कहीं एक्सेल में आता है प्रेफरेंसेस। ओके, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, रिबन जाएंगे, तो यहाँ पे डेवलपर करके एक ऑप्शन मिलता है आपको। रिबन एंड टूल बार में डेवलपर करके एक ऑप्शन होता है। तो क्विकली आप क्या करिए, दोस्त हु आर वर्किंग इन PC, go right click on any of the this one area, and go to ribbon and tool, enable the developer code। जैसे ही डेवलपर कोड एनेबल करते हैं, तो यहाँ पे हैंड रेस करिए, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू फाइंड आउट डेवलपर टूल। वेरी गुड, माशाल्लाह। यस, रेस्ट ऑफ द पीपल प्लीज enable it। जल्दी जल्दी करिए, बहुत सारे लोग अभी नहीं करे हैं। जैसा मैंने कहा कि आप ये एरिया जाके, रिबन का एरिया रहता है ना, ये रिबन जो है, ये खाली एरिया जहाँ पे रहता है, वहां पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं, तो रिबन, कस्टमाइज रिबन ऐसा कुछ ऑप्शन आता है। तो उसे जाके एक ऑप्शन है डेवलपर करके, डेवलपर टूल जो है उसको आप
एनेबल करना है। Okay, you can put down your hands. जिसको पता नहीं चल रहा है वो हाथ उठाइए। People who did not get this option, you finding it difficult, you can raise. It's very easy. राइट क्लिक करके आप कस्टमाइज रिबन को जाएंगे तो वो आ जाएगा। बहरहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो मैंने कहा कि एक सीरीज ऑफ एक्शन को आप रिकॉर्ड करके आप उसको नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज द यूज ऑफ मैक्रोस। सो आई विल गो टू इनवॉइस शीट अगेन। एक पहले इसमें एक सेल को मैं ये करने से पहले, दिस इज जस्ट ए फॉर्मेटिंग आई एम सेइंग। बहुत सारे दूसरे चीजें भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग का मैं बता रहा हूँ। आप काम शुरू करने से पहले आप ये देखिए कि देयर इज ऑप्शन कॉल्ड रिकॉर्ड करके एक ऑप्शन है, record macro. So once you click, make sure you don't do any mistakes. आप straight forward जो काम करना है उसको आपको करना है because it will be recording. So I will start macro recording. मैक्रो का नाम देना पड़ता है आपको हमेशा। नाम भी जो है स्पेस यू कैन नॉट गिव। सो आई विल से कलर मी। ओके ओके, माइनस नहीं अंडरस्कोर देंगे तो चलेगा। कलर मी करके दे दिया तो नाउ इट इज स्टार्टेड रिकॉर्डिंग माय एक्शन। व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू होम, आई विल गिव ए बॉर्डर and I will change the color of the background and I will change font. फॉन्ट का जो नंबर रहता है उसको हमेशा 14 रखता हूं मैं, और जो फॉन्ट पर्टिकुलर फॉन्ट है उसको भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। एंड देन आई विल कम टू डेवलपर एंड आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग। So now I created one, what do you call, a macro, which I can use it anywhere. अब शोरूम के डेटाबेस को आते हैं। ये जो कॉस्ट है ना, अगर समझिए कि ये कॉस्ट मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, इफ आई वांट टू यूज द सेम स्टाइल व्हाट आई क्रिएटेड इन द मैक्रो। सो मैक्रो प्ले करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, गो हियर, ये जो आइकन है इसका आइकन का नाम मैक्रो है। तो गो हियर, click here, it will give you the list of macros you have created. I will select color me and say I will run this macro. So see, whatever I did in the invoice sheet, the same thing appeared here. It gave the background color, border, and then the font of the particular thing. अब ये इसको एक हमारे एक्सेल शीट में रिकॉर्ड हो गया, so that you don't need to these things every time. So आपके फाइल में ये रिकॉर्ड हो गया है कि you have done this record macro and you can use it in any time. And also another beauty I can show you. I'll go to another sheet. I will go to school. So you want to apply this to the age also. So what you can do, if you very regularly, if you are using, you can create a button which can execute a macro. I select one button. I will click here. And when you click this, I want to run color me button, color me macro. I selected here. So यहाँ पे देखिए एक बटन आ गया। ये बटन का जो टेक्स्ट है उसको मैं आई कैन रीनेम कलर। ओके,
ये हो गया. Now, if I select a age column, if I click button, it will do the same macro in this cell as well. So I say you can do such thing with the help of macro. Now, there is another thing attached to macros. Macros is a programming, it writes a small code. The code will be written using a language called विजुअल बेसिक वीबीए. हम लोग उसको वीबीए करके बोलते हैं. तो sometime if you are little bit if you have a little bit knowledge of programming, then you can go to this VBA button and you can search for modules. यहाँ पे जो मॉड्यूल्स रहते हैं, ये देखिए, ये मॉड्यूल्स की जगह पर जाएंगे तो मैं अगर मॉड्यूल्स 1 क्लिक करूंगा तो यहाँ इसको डबल क्लिक करिए. आई क्रिएटेड वन कलर मी करके एक मैक्रो क्रिएट किया तो उसका कोड यहाँ पे है. सी इट रोट सच ए बिग फॉर्मूला, आई मीन कोड टू डू द टास्क. तो नाउ व्हाट यू कैन डू, ये देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर आप कोड को देखेंगे तो क्या करेगा. सेलेक्ट बॉर्डर किया, बाद में लाइन दिया, कलर ये किया, कलर का टिंट दिया, बॉर्डर का एड्ज वगैरह दिया इसने, एंड देन केम डाउन and did the same thing. यहाँ पे जो है कलर दे रहा है. यहाँ if you come down, यहाँ पे जो कलर कोड जो है, यहाँ पे कलर कोड, एवरी कलर हैज ए पर्टिकुलर कोड. तो यहाँ पे वो कलर यहाँ पे ऐसा डाल दिया. Now if I change this 3 character, if I change it to some other thing and I will save. Okay, when I save my Excel sheet, always remember to save the Excel sheet as macro enabled. I will show you how to do it. See, now my macro color got changed because I went to behind the code. मैंने कोड में जाके है ना थोड़ा छेड़खानी की तो ये कलर चेंज कर दिया. सो देर आर टू थिंग्स. एक तो मैक्रो इस्तेमाल करके आप चीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको कहीं पे भी फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं. सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट इन ए नीट वे. फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम है जाफर सादिक, जहरा सादिक. तो समझिए कि ये जो है एक स्टूडेंट डेटा है एंड यू आर हैविंग I will put this in a okay. This ये जो है आपके पास स्टूडेंट डेटाबेस है. नाउ assume every time when if you are like a teacher, you get the data of a student every month in this format, and then you want to do a certain step to segregate these things. So what you will do, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले तो मैं करके दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन रिपीट द सेम थिंग next time. You can record this as a macro and you can run this every time. So I will insert one new column and then I will go here
I will go to data. Assume that you want to separate first name and second name. So then what you can do is there is option to do that called text to column. ये text to column अगर जाएंगे यहाँ पे आपको या तो यू कैन सेलेक्ट ऑल योर डेटा टेक्स्ट टू कॉलम यहाँ पे बोलेंगे कि व्हाट इज द लाइक डिवाइडर बिटवीन टू वर्ड्स यू यू नीड टू टेल डिलिमिटेड करके उसका बोलते हैं तो वेदर यू हैव ए टैब और ए स्पेस मैं बोलता हूँ मेरे दोनों नाम के बीच में स्पेस है देन आई से नेक्स्ट फिनिश it came to here. See, it created Jafar is the first name, second name, it shifted to the next column. ऐसा ये divide करके we divided the first name into first name and second name आसानी से divide हो गया ये जो task है इसको you can record it and you can apply it every time whenever you want to do this task. तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसको मैक्रो में करके इसको हाउ यू कैन यूज इट इन फ्यूचर ओरिजिनली इफ योर डेटा इज लाइक दिस नाउ आई विल we need to go to the developer tool you need to record this macro now if ये जो डेटा सिलेक्शन रहता है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप ऐसा डेटा सेलेक्ट करते हैं so that means you are selecting from 3 to 6 there is one short code to select a column if you press shift and control and down arrow it selects from the beginning to the end of the row so that means when you are recording a macro when you do this अगर एक टेबल में 10 रो है एक टेबल में 100 रो हैं तो ये ऑटोमेटिकली फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड वो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट करके वो लेगा तो दिस इज वन ऑफ द ट्रिक यू नीड टू रिमेंबर सो लेट मी स्टार्ट द मैक्रो नेम स्प्लिटर करके इसका मैं नाम दे देता हूं यू कैन गिव एनी नेम एंड आल्सो यू कैन गिव शॉर्टकट की आल्सो दैट वी विल सी लेटर मैं ओके बोलता हूं नाउ द रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड व्हाट आई एम गोना डू इज आई विल राइट क्लिक आई विल इंसर्ट ए कॉलम and then I will name the column as second name then I will come here shift control down I will select from beginning to end data I will go to data tab there is something called text to column option text to column में क्या करता हूं मैं I want to divide the full name which is there into first name and second name so delimiter I have to select next आपके नाम के बीच में क्या है कॉमा है या स्पेस है या टैब है यू शुड टेल नाउ इन माय केस आई विल सेलेक्ट space as an option because my data has space in between my names so next finish okay तो अगर आप एक्सेल में वापस आएंगे तो ऑटोमेटिकली इट फिल्ड द डेटा इन द नेक्स्ट कॉलम जाफर सादिक हो गया जहरा सादिक अहमद हसन रिजवान अहमद ऐसा इसने दो ये करके दे दिया नाउ व्हाट यू कैन डू यू कैन गो टू डेवलपर एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग ठीक है नाउ आई विल गो टू a new sheet wherein I have full name of the every month assume that you get full name like this
ओके, ये समझिए कि ये डेटा आपके पास यहाँ पे है. दिस विल बी बोल्ड एंड दिस इज लाइक, मैं ये कर देता हूँ. ठीक है. नाउ इफ आई गो हियर, इफ आई सेलेक्ट दिस, if I go to developer, I will run the macro, the mac, sorry, I will go to macros, I will select name splitter and run. तो ये ऑटोमेटिकली, इफ यू गो बैक टू योर थिंग, ये रवीश कुमार, राहुल रॉय और महेश भूपति वो ऑटोमेटिकली वो करके आपको दे दिया. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ recording a macro. You can record a macro and you can run any time. So इसको अगर जैसा मैंने कहा, एक बटन बना के, ये ऑन ए क्लिक ऑफ ए बटन आल्सो you can run the macro. So this is sometime very good when you want to repeat the same thing again and again. This can be used. So macro जो है, हर चीज आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते. ये जो कॉमन रिपीटेड जो टास्क रहता है उसी को ही आप रिकॉर्ड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, splitting a name into two. So this is the common task if you are doing in your office. You make this as a macro and use it whenever you want to make it. अगर कलर स्पेसिफिक फॉर्मेट देना है टेक्स्ट को, जरा स्पेसिफिक अगर एक कलर बॉर्डर वगैरह देना है टास्क को, एंड एवरी टाइम यू आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, तो यू कन्वर्ट दैट इनटू ए macro and then utilize it. So that is about macro. And if somebody has programming language thing, they can go and dig into the macro file and see what kind of see name splitter एक प्रोग्राम वो लिखा यहाँ पे. it recorded whatever I did. यहाँ पे अगर आप देखें, सिलेक्शन, शिफ्ट राइट, कॉपी ओरिजिन, रेंज B2 सेलेक्ट करने मैंने शुरू किया, एक्टिव सेल क्लिक किया. सो इट रिकॉर्ड्स एवरीथिंग वॉट एवर यू डू एंड देन इट डज द थिंग. You can use this button to come back from developer. Let me, ये जो ये टूल है, इसको इस्तेमाल करते हुए आप you can come back to the Excel thing. Okay, so that is about macros. मैक ये जो प्रोग्रामिंग का जो स्क्रीन है शायद आपको दिख नहीं रहा था. लेट मी शेयर द होल स्क्रीन. यहाँ पे मैंने ये बता रहा था. आई जस्ट रियलाइज दैट यू डिड नॉट सी द विजुअल बेसिक स्क्रीन. ये जो विजुअल बेसिक स्क्रीन, विजुअल बेसिक करके एक बटन है, अगर डेवलपर के अगर आप इसमें जाके देखें तो यहाँ पे आपको यू विल सी दैट देयर इज अ बटन कॉल्ड विजुअल बेसिक. यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये स्क्रीन देखिए आप, यू विल सी मॉड्यूल्स. इफ यू डबल क्लिक मॉड्यूल्स हियर, मैं इसको क्लोज, ये मॉड्यूल्स को अगर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो मैक्रो आपने जो बनाए हैं वो यहाँ पे दिखाएगा. आई क्रिएटेड वन मैक्रो कॉल्ड कलर मी मैक्रो. सेकंड मैक्रो आई डिड वाज, इफ यू स्क्रॉल डाउन, नेम स्प्लिटर उसका नाम. तो वो जो मैं काम करता हूं उसको वो रिकॉर्ड करते जाएगा. एंड हियर यू कैन प्ले विद दिस कोड. अगर आपको विजुअल बेसिक नॉलेज है तो यू कैन प्ले विद द कोड एंड यू कैन राइट योर ओन कोड हियर. जैसे मैंने ये कलर मी को जो है यहाँ पे जो कलर कोड इसने डाल रहा है, ये कलर मी को मैंने चेंज किया तो इट इफेक्टेड इन द मैक्रो. शैडो होना है तो शैडो को ट्रू कर देंगे, आउटलाइन चाहिए तो आउटलाइन फॉन्ट ट्रू कर देंगे. सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन प्ले विथ द कोड. सो इन ऑर्डर टू गो बैक, आपको ये स्क्रीन से वापस जाने के लिए यू नीड टू क्लिक अगेन दिस एक्सेल. ये जो बटन है, ये एक्सेल को अगर क्लिक करेंगे तो आपको
वापस ये एक्सेल में लेके आके आपको छोड़ेगा। ठीक है। सो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू मैक्रोस वेर इन यू कैन डू रेगुलर items whenever you have like a back to back thing related to macro. If you have any questions, like let's take it. Sister Hajira हाथ उठाए हैं बहुत वक्त से. You can ask the question if you have anything. Unmute and ask. सर ये विजुअल बेसिक का हाँ जब कब कब ओपन करना है सर, उसको मैक्रो चलाने के बाद या हाँ, मैक्रो मैक्रो स्टार्ट रिकॉर्ड करके सेव करने के बाद उसको विजुअल बेसिक को ओपन करना है। और विजुअल बेसिक ओपन करना जरूरी भी नहीं है। इफ यू आर नॉट ए टेक्निकल गए तो विजुअल बेसिक के कोड को मत जाइए, वहां पे अगर छोटा भी अगर एक मिस्टेक करते हैं तो आपका मैक्रो चलेगा नहीं। तो इफ यू हैव ए प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड देन यू कैन गो टू द विजुअल बेसिक स्क्रीन एंड यू कैन डू सम काइंड ऑफ चेंजेस। एक बार जस्ट दिखाए सर कैसे जाते हैं जो मैक्रोस है उसके कोड के लिए। हाँ देखिए, ये है ना, मैं आपको ये कर देता हूँ। एक तो रिकॉर्ड मैक्रो ये बटन है। ये रिकॉर्ड करने के बाद जो है सब आपके मैक्रोस यहाँ पे जाके बैठे रहते हैं। हाँ ठीक है तो सर। जी, जब आप इसको मैं डिलीट करता हूँ। जब आप कोई एक मैक्रो को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो ये विजुअल बेसिक को जाइए आप। मैं विजुअल बेसिक को गया, तो जब ये स्क्रीन ओपन होता है तो आपके पूरे मैक्रोस जो है मॉड्यूल्स करके एक फोल्डर रहता है, उसके अंदर रहते हैं। आप देखिए, इसको मैं यहाँ ये करता हूँ। ये मॉड्यूल्स को अगर डबल क्लिक करें तो आप जो जितने भी आप ये करे रहते हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। कलर मी करके मैंने बनाया, और नीचे जाके देखें तो ये आपको दिखाएगा कि क्या क्या करा वो दिखा रहा है। ये देखिए कलर्स जो है, ये हेक्सागोनल कोड इसमें वो कलर लिखता है। अब देखिए 112 करके है। मैं इसको 888 कर दिया। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं वापस यहाँ पे जाके ये ये सेलेक्ट करके डेटा को मैं अगर मैक्रोस में कलर मी मैक्रो को मैं रन करता हूँ तो देखिए वो ग्रीन कलर दिया। हालांकि हम लोगों ने जब कलर मैक्रो रिकॉर्ड करने में क्या कलर था, किसी को याद है? ब्लू था सर। ब्लू कलर सर। हाँ, ब्लू, एक ब्लूइश शेड जो रहता है वो था। नाउ सिंस आई वेंट टू द कोड एंड चेंज द कलर फॉर्मेट, इट अफेक्टेड हियर। तो विजुअल बेसिक कोड को जाके आप चेंज कर सकते हैं एंड इट विल अफेक्ट इन योर एक्चुअल थिंग। सर मैं एक्चुअली मुझे ब्लैंक दिखा रहा है सर, वो ओपन करने से मैं शेयर किया है स्क्रीन क्योंकि मेरा आपके पास फोटो। मैक्रो नहीं है ना। नहीं नहीं है सर, रिकॉर्ड किया है एक मैक्रो अभी। आपने नहीं मैका ये देखिए, मैं विजुअल बेसिक को जा रहा हूँ। यहाँ पे ये जो मॉड्यूल्स हैं वो दिखा रहा है आपको। नहीं नहीं सर, पूरा ब्लैंक स्क्रीन दिखा रहा है ऊपर में। व्हाट्सएप में अभी फोटो भेजा है, देखिए सभी। हाँ, एक सेकेंड। हाँ वही। अमीर के नाम से ना? जी जी यही 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 फोटो। ओके, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक आपको ब्लैंक दिखा रहा है। ब्लैंक ये दिखाना नहीं चाहिए। आपका एक्सेल का नाम जो है आसमा है। ओके। जी जी। वो मैक्रो जो है वही है, आसमा फाइल में ही करे हैं आप। ठीक है। आपको हाँ क्या सर कर वही सर, वही फाइल में, हाँ वही फाइल में। हाँ, आपको क्या करना है, ये थोड़ा गौर से देखिए ये स्क्रीन है। यहाँ पे जब एवरीबडी जस्ट वॉच केयरफुली, मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद जो है आपको यहाँ पे फाइल मेन्यू जाके, अब यहाँ पे जाते हैं ना, फाइल, इसको सेव ए कॉपी और सेव एज को जाके ये एक ऑप्शन आता है, मैक्रो एनेबल्ड एक्सेल शीट करके। देखिए, मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक ऑप्शन मालूम हो रहा? हाँ है सर है। हाँ, वो सेलेक्ट करके आपको वो फाइल असमा जो फाइल है उसको मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक करके सेव करिए, तो आपका मैक्रो सेव होगा, वरना सेव नहीं होगा। वो सिक्योरिटी इश्यू की वजह से वो वैसा करते हैं माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा तो अभी
करके देखिए अभी। सेव किया है सर, लेकिन ऐसे ही आ रहा है, अभी भी सेम स्क्रीन ही आ रहा है। अब दो दो मैक्रो रिकॉर्ड किया है, एक कलर का और एक नेम स्प्लिट का मैं। ओके, तो एक काम करिए, वो जो डेवलपर टूल में मैक्रो ये जो है ना, यहाँ पे जाके इसका फोटो लेके डालिए। लेट मी सी वेदर यू हैव मैक्रो और नो। तो सर रिकॉर्ड है मैक्रो का। डालिए उसका फोटो, होना चाहिए मतलब अगर रिकॉर्ड मैक्रो अगर रिकॉर्ड हुआ है तो आना चाहिए वो। देखिए ओ, सर, नीचे वाले फोटो में दो फाइल है, कलर मी और एस टी बोल के। एस टी वाला नेम स्प्लिट के लिए मैं ये रिकॉर्ड किया था, कलर मी वो पहले वाला। ओके, कलर मी आपने करा है, रन रन करेंगे तभी आ रहा है। तो आपको विजुअल बेसिक में नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है? हम्म, दिखाना चाहिए वहाँ पे। फाइल इसमें विजुअल बेसिक को जाके फाइल में देखिए दिखाता है क्या करके ओपन करने के लिए। फाइल में सेव आसमा है, इंपोर्ट फाइल एक्सपोर्ट फाइल है सर। हाँ, सेव आसमा करिए। फिर भी नहीं दिखा रहा है। नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा रहा है? लोकल विंडो। आप एक काम करिए, ये जो व्यू जो मेन्यू है उसमें अलग अलग ऑप्शन आप क्लिक करके देखिए। वो सा तब ये कि इसमें आपको दिखाना चाहिए वो। ठीक है सर, ओके। ठीक है। अब वो समझ में नहीं जा रहा है कि आप हाउ एग्जैक्टली इट इज हैपनिंग। बाद ठीक में है सर, चाहिए कोई बात नहीं। होने के बाद एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेंगे। मैं देखता हूँ कि आपके स्क्रीन में क्या आ रहा है करके। ठीक ठीक है। है सर, थैंक यू ओके। सर। Hello, Assalamualaikum, sir. Hajira वेलकम। here. जी, Sir, I put up a question in the group, sir. Can you please answer me? लेट मी सी। व्हाट्सएप के ग्रुप में। Yeah, the question is, she's asking, we can apply macro in different Excel files. हाँ हाँ, you can save macro in one Excel sheet and you can load macro in the यहाँ पे देखिए, macro in all open workbook करके है ना, ये देखिए। यहाँ पे आप यू कैन सेलेक्ट अदर एक्सेल शीट विच हैज मैक्रो। ठीक है। आप एक फाइल में एक शीट में आप सेव करिए। उसके बाद अगर आपको दूसरे फाइल में उसको वो मैक्रो को इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे जाके उसको लोड कर सकते हैं। इट विल शो हियर। अगर मुझे चाहिए एक्सेल इन लास्ट क्लास करके एक फाइल है, उसमें अगर कोसा मैक्रो है वो चाहिए तो यहाँ पे दिखाएगा। मैं दिस वर्कबुक, ये जो वर्कबुक है इसमें जो मैक्रो है वो दिखा रहा है। अगर इफ आई सेलेक्ट IMA एक्सेल क्लास, ये है दिस एक्सेल लास्ट क्लास दिखाऊंगा, तो देर इज नो मैक्रो इन दैट फाइल। तो यू कैन सेव, no problem. You can load it from another Excel also. Okay, मोहम्मद साहिफ। ठीक है, हम लोग अब क्या करेंगे, मैक्रो का तो इतना हो गया। यू कैन फर्दर वर्क ऑन इट। मैंने जो एग्जांपल दिया वही आप बना के आप ग्रुप में डाल सकते हैं। सो नाउ लेट मी recap some of the things which are very important, just to give you heads up के क्या क्या आपको सीखने के लिए फोकस करना चाहिए। अगर यहाँ पे जाएंगे
तो let's start from the होम जो रिबन है, रिबन के थ्रू जाएंगे हम लोग के रिबन में क्या क्या हम लोग सीखे हैं. You have learned lot of things in home ribbon where आप फॉन्ट चेंज करना, बॉर्डर चेंज करना, कलर देना है, जो डेटा सेल को सेंटर में दिखाना है, लेफ्ट राइट करना है. एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन इन द होम इज द फॉर्मेटिंग ऑफ ए सेल. वो जो करेंसी दिखाना है तो करेंसी है, अकाउंटिंग है, डेट दिखाना है. तो दीज थिंग्स आर वेरी हैंडी. एंड आल्सो यू हैव जो ये जो डेसिमल पॉइंट्स दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल एक कुवैती KWD दिखा रहे हैं. If I type 22, you are supposed to show the number 3 zeros also. That is how the Kuwaiti number is supposed to show. When you show a dollar, then you have to show 2 zeros. So वैसा है, with the help of these things you can format. And then one of the interesting thing we learned in the initial classes was conditional formatting, wherein आप उसको condition दे सकते हैं कि अगर if particular number, ये जो समझिए कि हम लोग स्कूल में we try to find out the age of a student. यहाँ पे एज को कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसा दे सकते हैं, new rule, the value number is like ये पर्टिकुलर नंबर जो है ये एक पर्टिकुलर इससे अगर ज्यादा है, ग्रेटर देन 40 है, तो इसको रेड में दिखाओ. एंड देन यू कैन ड्रैग एंड फॉर्मेटिंग फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन ऑप्शन है. मैं बोलता हूँ कि 40 साल के ऊपर अगर कोई भी है तो उसको लाल कलर में दिखाइए. आई ड्रैग डाउन, सी ऑल द अबव 40 एज के लोग जो हैं वो लाल हो जाएंगे. सो दिस काइंड ऑफ थिंग यू कैन डू इट फ्रॉम द this conditional formatting. Conditional formatting is a very commonly used thing. टेबल फॉर्मेट भी कर सकते हैं, पूरा टेबल को है ना एक स्टाइल दे सकते हैं. यू कैन इंसर्ट ए रो, यू कैन डिलीट ए रो, यू कैन लाइक फॉर्मेट लाइक मार्जिन वगैरह, हाइट कितना देना है वो कर सकते हैं. सेल फॉर्मेटिंग, ये ऑलरेडी प्री रिटन डिजाइंस हैं यहाँ पे. यू कैन सेलेक्ट प्री रिटन, ये जो डिजाइंस हैं इसको सेलेक्ट करके भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं. सिमिलरली यू हैव इंसर्ट रिबन, इसको रिबन कहते हैं हम लोग. इंसर्ट रिबन में one of the very important thing you should learn is पिवोट टेबल. हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा, अगर किसी को पिवोट टेबल समझ में नहीं आया, यू कैन वॉच माय रिकॉर्डिंग 2-3 times and inshallah you will be able to grasp the concept of pivot table. I highly recommend that you learn pivot table very efficiently. You can utilize pivot table in a many way. Similarly, you can insert pictures, you can insert shapes, you can do, and one of the important section in this insert is chart. You can have bar chart, you can have pie chart, and we also learn how to play with the chart thing. Sparkly lines are like the things which are inside the cell. It inserts the particular thing inside. So similarly, you can go to draw and you can draw something on the Excel sheet. Page layout is very important, wherein you can define the page layout is purely for print purposes. And I know for a fact that many people, they struggle when it comes to printing a document in Excel sheet. When you print, half table comes in one page and half table comes in second page. So I always tell my students to select something and then print.
Don't print vaguely. You whatever you want to print, you just select here. Then when you press Control P, you can tell that you want only selected item. See, selection. So it will print only the selected item in a way. And if you want the printing to be landscape, you can select landscape option, portrait, and you can select the size also. Like for example, if you want to print A3 big size Excel sheet file, you can select A3 file, and it will print A3 documents. You can mention page breaks in between. You can insert an image. In the last class, we saw how to insert the things. And also, if you don't want to see these ones, see now it is plain without the guides. You can remove the guides just by clicking like this from the grid line. Similarly, headlines also, ABC, if you want to remove, you can hide for a time being, you can hide. Likewise, you have a formula tab wherein there are many formula. You can just select and start using them. One of the formula is like auto sum. If you have bunch of number, at the end you want to find a total, you just click auto sum, and within a fraction of second it will find the auto sum of a thing. Similarly, you can have average. You can find the average of this one. You don't need to write a formula for this. It will help you. This one, you want to find a minimum number from this one. This is minimum number from the this thing. So likewise, they have categorized formulas into different. If you click date, you can have date, days, hours. These things are formulas, you functions. You can use it to use your day-to-day things. Similarly, data tab is also important, wherein you can import data from external source. If you have last class, I showed you how to import a table from an image. If you have an image of a table, then save the table in the any place in your computer, and you can select import data from picture, and it will copy and paste the thing. You can import data from a website also, from a HTML page also you can import. For example, if I go here, data from database, from HTML, there was some place which has import data. Okay. Anyways, you can import data from multiple places. You can import data from a database like SQL database or ODBC database. From a text document also, you can import data from a text document. And you can filter through your data from, you can rearrange the data into sorting from A to Z or Z to A. We also learned something about filters as well. And then we also learned text to column. Today we learned how to divide full name into first name and second name. You can remove the duplicates as well. Data validation is very important and very handy tool. You can remember how to use it. Whenever you have confusion, you can refer back the recorded videos. We learned grouping, ungrouping, subtotal, all these things we already learned in previous thing. Review, you can put a comment on a particular formula, anything, and you can tell somebody who is working on the sheet. If you want to tell, for example, I want to tell one comment here that this formula is to calculate average. This is just an example.
and you put this comment. So next time when somebody is working on it, he just need to click here and see what is the comment written here. So the comments will be highlighted in a particular color. So you can put all this comment. And also you can protect your Excel sheet. For example, you have done a great hard work in creating one very nice formula in Excel sheet. You want to protect it. So click here. You can mention, you can put a password, a difficult password, verify the password, and you can tell what all you need to disable. Whether you want to data entry to be disabled here, you want people not to delete any content like this. So this is also a very handy. You can protect a sheet, you can protect the whole workbook also, you can do it. Similarly, weave is only for like we learned how to freeze, unfreeze top column and rows. We also learn how to hide a particular. If you don't want to show some columns to somebody, you can hide them. So like this, you can utilize the weave tab. Automate is not required. Developer tool, we learned how to record the macros and how to edit the visual basic thing, how to add a button and how to call a particular thing on the Excel sheet. So this is more or less overall Excel course, and these are the important stuff you need to focus on while learning. So any module you don't get it, you always go back to YouthWing recording channel and watch again and again so that you can become perfect. The WhatsApp group will be open for a few days so that like any question you have, you can ask, you can send me personal question also. I can try to help you out to understand these things in a better way. So that's it. We will open for questions for some time, and then I will hand over to Asim Bhai. Brother Samir, sister Abida, Anita Handa. सर ये शॉर्टकट से हम लोग जब टेबल बनाते हैं, कंट्रोल 2 से टेबल बनाते हैं, अगर हमें बैक जाना है नॉर्मल के लिए तो क्या करना है सर? वो व्यू को जाके ये देखिए, ये प्रिंटिंग के लिए बोल रहे हैं ना आप? नहीं सर, टेबल हमें टेबल किया स्लाइसर के लिए, हाँ हाँ, टेबल यूज किया, फिर बाद में मुझे नॉर्मल चाहिए वर्कशीट। वर्कशीट। हाँ, वो टेबल करेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना? अगर बैक जाना है सर, नहीं चाहिए तो क्या करना है? हाँ, अगर वो सेव सेलेक्ट करके है सेव ना, करें। हाँ रिमूव फॉर्मेटिंग, ये है ना ऑप्शन, फॉर्मेट डिलीट ऑल द फॉर्मेट, क्लियर फॉर्मेटिंग करके एक ऑप्शन आता है। अगर वैसा करेंगे तो वो निकाल देता है सब कुछ। इसमें सर होम में फॉर्मेटिंग ऑप्शन का वो चलिए, हम नया डैशबोर्ड में कहीं डाला हूँ। वो टेबल सेलेक्ट करना पड़ता है आपको। हम देखिए यहाँ पे है ना। सेलेक्ट किया है सर, टेबल सेलेक्ट किया है। हाँ, आप अगर रिव्यू वगैरह जाते हैं, ओके, मैं ये टेबल को कन्वर्ट किया, उसके बाद डेटा, ये क्लियर, मुझे लगता है ये क्लियर क्लियर ऑल करेंगे तो वो पूरा चले जाएगा। आप अगर प्योर टेबल से आप ये कर रहे हैं ना, इसको मैंने टेबल डिफाइन किया हूं, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक, pivot table option, and
यहाँ पे देखिए पिवट टेबल में जाएंगे, क्लियर करेंगे तो मैं समझता हूँ वो क्लियर कर देगा। पिवट टेबल का अगर वो टेबल का फॉर्मेटिंग अगर आपको ये करना है तो आप जाके उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप ये फॉर्मेट में डिजाइन में जाके भी अगर आप चेंज करते हैं तो वो भी होता है। यस सिस्टर अनीता हंडा। Yes, good evening, sir. Sir, my system is telling in my macro setting, you cannot enable it because it will be a dangerous code can run. That's why it is not showing any macro setting in my system. See, sometime what happens, your antivirus also protects not to use macro. So if you're using like a organization laptop or a PC, then sometimes it depends, like if the system admin has disabled. What you do is save the file, you save file as macro enabled file. See, if you see the screen, save as, you have to select macro enabled Excel sheet. Yes, that I have done, but still it is not showing because my system is already, it is disabled all macro and with notifications. Okay, okay. So it depends if the what you call antivirus has disabled, then you cannot. You need to enable it from the security thing. Okay, Will then it is okay. No issues now, correct? harm things. Okay, thank you, sir. You're welcome. Sister Abida. Assalamualaikum, sir. So Yeah. first of all, Jazakallah khair for all the time and so much of efforts you gave to teach us. Really, it was very helpful and productive. So one small question. Suppose I have to change the font from lowercase and higher case, what you call uppercase. Okay. Suppose I have a list of name which has uppercase also and lowercase also, and but Mm. I want to make it all in uppercase. How would I do that in Excel? In the formatting thing, you have lot of options. Let me go here. Some names are uppercase, some name are like this you're saying, right? Edit, weave, heading, format, style. You have this, and if you drag, I think you can use a formula upper, UPPER. yeah, with the help of formula also you can do, but I think there is one tool here which can also do the, this is angle. Yeah, I think here it's not there. You convert this into a normal text. Right click maybe, insert clear content. Since this is what you call a word kind of feature, Excel, I think it doesn't have. But as Brother Asim said, upper also it, but you have to write a formula for this one. And then you drag, it converts everything into the uppercase. But for that, you have to write the formula. Uh, Easiest way I would say is you take this content to the word, change the thing there, and you can bring it back here easily. The word related features, you can do it from the Word document. Yes, Sister Unnati.
Hello. I had one question. So if we are printing our Excel sheet on a A4 size paper, and let's say our content is not fully fitting into the A4 size paper, how do we make the settings accordingly? Okay, see, let me go to a place wherein we have a lot of data. Okay, see here, generally assume that you want to print all this big table. So first I select the table and then I control P. Now it is saying to me, if you see this area, it is saying that it will print 3 documents because the text itself is so big. So here you have multiple option you can select. Print active selection only. I need only selection to print. Margin, narrow margin you can use so that you can save the thing. If I select scale to fit, it will print the whole thing in one document. Just note here, scale to fit if you make, it will print the whole thing in one document. Only problem is it will make the font so small, so sometime it might be readable or sometime it might not be readable. So it depends how much you want to compromise. You want to compromise with the size of the text or the number of pages it will print. So this is very important to note whenever you want to print a document. Either you want to print page wise, or you can print entire thing one page, but you will make sure the font is not compromised. Hope I answered your question. Sister Hajra, you're raising the hand. Muhammad Saif. Okay, I think we will stop here. Already it is 8:50, so I will hand over to Brother Asim for further announcement. Okay, so Alhamdulillah, by grace of Almighty, we have completed the sessions. हमारा ऑनलाइन एक्सेल कोर्स जो है बेसिक एंड एडवांस्ड अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं हमारे ट्रेनर जाफ़र सर और नवीद सर दोनों को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर जाफ़र सर, स्पेशली आपको कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से वीक में 2 बार टाइम निकाल कर हमारे लिए सेशंस कंडक्ट किए। साथ में आई वुड लाइक टू थैंक द पार्टिसिपेंट्स, सभी पार्टिसिपेंट्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस कोर्स के अंदर इंटरेस्ट दिखाया और हमको भी एक मोटिवेशन दिया कि हम ऐसे टाइप के प्रोग्राम्स आगे भी कंडक्ट कर सकते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों ने असाइनमेंट्स वगैरह भी बहुत अच्छे अंदाज में सबमिट किए, तो थैंक यू वेरी मच। इसके साथ साथ यूथ विंग जो है IMA एंड IMA यूथ विंग अलग अलग एक्टिविटीज़ करती है कुवैत में, जो स्पिरिचुअल सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए। तो आप लोग जो भी कुवैत में है तो हमारे साथ टच में रहिए, हमारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए। IMA के बहुत सारे विंग्स है, जो यूथ्स है उनके लिए यूथ विंग है, जो लेडीज़ है उनके लिए लेडीज़ विंग है, और दूसरे जो एडल्ट्स हैं उनके लिए IMA है। तो आप लोग हमारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए, हमारे साथ टच में रहिए। हमारे अपकमिंग एक्टिविटीज़ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आती रहेगी। जैसे हम ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं, मेडिकल कैंप्स करते हैं, बीच क्लीनिंग है, उसके साथ साथ इस्लामिक कैंप्स करते हैं। तो ये सब में आप लोग पार्टिसिपेट करिए, हमारे साथ टच में रहिए। इसके बाद सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि जैसे आपने ग्रुप में देखा होगा, जेंट्स ग्रुप में हमने डाले थे आज की 26 जैन को हम एक ऑफलाइन इवेंट कर रहे हैं खैतान में, जो इसके अंदर जो है एक बेसिक रिवीजन रहेगा जो अब तक हमने किया है वो, लेकिन मेन पर्पस इसका है कि हम ट्रेनर्स को और आप लोग को और हम लोग सब एक साथ में मिलकर एक दूसरे को जान ले, पहचान ले
और उसके साथ साथ थोड़ा रिवीजन कर ले, और उसके बाद हम जो वहाँ पर आएंगे लोग, उनको हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी करेंगे। और जो लोग नहीं आ सकते उनको हम डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन दोनों केसेस में ये कंस्ट्रेंट है कि जिन लोगों ने अब तक असाइनमेंट सबमिट किए हैं उन्हीं को सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। आज के असाइनमेंट्स कंसिडर नहीं होंगे। आज से पहले जितने लोगों ने ग्रुप्स में असाइनमेंट किया है उन लोगों के हमारे पास नेम्स नोटेड है, उन्हीं लोग को असाइनमेंट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। तो आप लोग जो है जो कुवैत में है, स्पेशली हम लोग जेंट्स के लिए इसलिए रखे हैं क्योंकि लेडीज़ के अरेंजमेंट के लिए स्पेस इश्यूज है, दूसरे कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए ओनली फॉर जेंट्स है ये 26 को 9 AM से रहेगा। एड्रेस और बाकी डिटेल्स हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। तो आप जो लोग भी कुवैत में हैं और जेंट्स लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस इवेंट को अटेंड करिए। और इसी के साथ साथ हम इस सेशन को फिनिश करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। जाफर सर, इफ़ यू वांट टू ऐड एनीथिंग। Jazakallah Asim bhai. First of all, I would like to thank YouthWing for organizing this Excel course. Indeed, it is beneficial for many. The amount of registration you saw, it itself says that there are a lot of requirement for such learning. So Alhamdulillah, we tried our level best to give all the participant best of Excel course, and also by recording and sharing. उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एक्सेल ऑफ कोर्स, आप प्रोग्रामर हो या सेक्रेटरी हो, जहाँ पे भी आप हैं ऑफिस में, मैं नहीं समझता कि कोई भी एक इंसान विदाउट एक्सेल वो काम कर सकता है। इफ ही इज आल्सो नासा में अगर बैठ के वो रॉकेट लॉन्चिंग भी कर रहा हो, उसको एक्सेल की जरूरत पड़ती ही है। तो it becomes very important that you learn Excel and move ahead in your career. Excel के बाद there are lot of career opportunity. अगर आप डेटा एनालिसिस के फील्ड में अगर जाते हैं तो there are lot of job openings. नेक्स्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट के पावर BI करके एक कोर्स है, उसको भी आप सीख सकते हैं। YouthWing can mark this thing. If somebody wants to learn Power BI, you can organize Power BI course. Excel का वो extension very advanced analysis है. It's a very good tool. If you happen to get some videos or tutorials, try to learn on your own and move ahead. Power BI अगर आप expert होते हैं तो you can work as a analysis, data analysis in many companies. Oil companies, they keep data analysis as a job. गवर्नमेंट कंपनीज में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इट हैज़ लॉट ऑफ स्कोप इन इटसेल्फ। उम्मीद है कि आप वीडियोस वगैरह देख के आप इसको अच्छा एक्सपर्ट होंगे इसमें। एनी हेल्प यू नीड फ्रॉम ट्रेनर्स, you always have group, you can contact in the group and we will happy to answer inshallah. Jazakallah khair. सर्टिफिकेट्स जो है वो डिजिटल सर्टिफिकेट्स हम लोग मोस्टली जनवरी एंड या फेब के फर्स्ट वीक तक मिल जाएंगे। और आप लोग सर्टिफिकेट पे ज़्यादा फोकस मत करिए, आप लर्निंग पे फोकस कीजिए। यूट्यूब पे सब वीडियोस अवेलेबल है, अगर आपको रिविजिट करना है तो आप रिविजिट कर सकते हैं। और जैसे जाफर सर ने कहा कि फ्यूचर में हो सकता है हम इसके लिए और आगे के फ्यूचर पाथ के लर्निंग से उसके लिए भी हम सेशंस अटेंड कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच। I'll end the session. Bye. Allah Hafiz.